मेक योर ऑन जूम चैनल और आज मेरे स्ट्रीट डायरीज पे मुझे मार तो नहीं खाना है बिकॉज थप्पड़ से सभी को डर लगता है, पर बहुत सारा खाना खाना है, स्पेशली मोमोज. सो जॉइन मी एज आई वेलकम पवेल गुलाटी ऑन. Hello. How are you? I'm good. How are you doing, Very Pavail? well, thank you. And I could see that आप काफी excited हो. कुछ खाया नहीं आज कुछ खाया है? मैंने लंच स्किप कर लिया because I knew I was coming to meet you. Yeah. और आप बहुत खिलाते हो, तो मैंने सोचा लंच स्किप कर लेता हूँ, बेस्ट है. And how much do you enjoy like having momos? देखो मैं दिल्ली से हूँ, ठीक है, तो मोमोज इज समथिंग दैट आई एब्सोल्युटली लव. बॉम्बे में ज़्यादा पहली जगह पे मोमोज नहीं मिलते थे. थैंकफुली नाउ देयर इज अ प्लेस सूरज लामा है यहाँ पर दार्जिलिंग मोमोज करके है, लेप्चा मोमोज. सो ग्रेट मोमोज नाउ. Yeah. आई ट्राई टू अवॉइड ईटिंग इट बिकॉज आई एम एन एक्टर, सो आई कांट बी ईटिंग दिस ऑल द टाइम. बट अगर मैं एक्टर नहीं होता तो शायद मैं रोज ही खा रहा होता है. तो चलिए पहले आपकी एक्टिंग को साइड पे रखते फिलहाल के लिए थोड़ा कुछ खाते हैं. I think I'm gonna have the steam one, chicken steam. आपको और मोटा कर देता है आपको. नहीं मुझे चीज नहीं चाहिए. Cheese. We rather have a cheesy conversation than having cheese, you know. Oh, I would rather wow. suggest that. Wow. I have to tell you this story behind this place. It's very special because सोनाक्षी सिन्हा के जो ड्राइवर थे, उनकी ये जगह है. Oh really? Yes. Oh, I didn't know that. And I've heard because सोनाक्षी के घर पे खाना वैसे ही बहुत अच्छा बनता है. Yeah. And वो उसके घर पे बिरयानी बड़ी फेमस है. So I think it's a very foodie household. So even the driver made a nice restaurant out of it. That's amazing. Yeah. And मोमोज की बात करें तो पवेल, how many times मोमोज के लिए कभी मार खाया है, कभी ऐसे घर से बाहर निकले हो और दिल्ली की सड़कों पे गए हो ठंड में, एंड स्पेशली मॉल्स के बाहर? मोमोज के साथ ना मेरी बहुत ही एक अजीब सी स्टोरी है, एक्चुअली बड़ी एम्बैरेसिंग सी है. बेसिकली होगा ना, मैं छोटा था, आई थिंक आई वाज अबाउट 11 years old और 10 years old, और स्कूल से आया था और मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी मोमोज की. मेरे मॉम डैड दोनों काम करते थे, कोई घर पे नहीं होता था, मैं और मेरा बड़ा भाई होता था. तो हम स्कूल से आए हैं और मैंने अपने भाई से बोला मोमोज खाएगा, उससे बोला नहीं खाऊंगा. वो कभी मना नहीं करता है, तो मैं बोला पक्का नहीं खाएगा? कहता नहीं खाऊंगा. मैं बोला देख, अगर आ गया तो मैं शेयर नहीं करूंगा. क्योंकि फिर होता है ना कि अच्छा एक दे दे या दो दे दे. मैं बोला शेयर नहीं करूंगा. फिर मैं कहता नहीं खाऊंगा पक्का, प्रॉमिस. मैं बोला ठीक है. मैं गया बाहर, तब तो डिलीवरी होता नहीं था. मैं गया, मैं लेकर आया और मैंने खाना शुरू किया. उसने बोला एक दियो. मैं बोला मैं क्यों दूं, तूने बोला था नहीं खाएगा. सो बाय द एंड ऑफ इट मैंने उसको नहीं दिया और लड़ाई हो गई हमारी. जब मॉम शाम को घर पे आई, उसने मॉम को ये बोला कि ये अपनी खाना शेयर नहीं करता है मेरे साथ. मेरी माँ ने जो मुझे कूटा है उस दिन, मतलब एक मोमो की वजह से मुझे कम से कम 36 थप्पड़ पड़े होंगे उस दिन. या थप्पड़ का सिलसिला यानी इतने पुराने टाइम से चल रहा है तुम्हारे लाइफ में. ये थप्पड़ की गूंज लगता है बजना बंद ही नहीं हुई है, राइट? तापसी के साथ में क्या क्या खाया? बिकॉज आई हैव सीन लाइक यू गाइस हैव शॉट एट सम गुड लोकेशंस आल्सो व्हाइल वर्किंग ऑन दिस वन. सो एंड शी इज अ फूडी. आई हैव सीन हर लाइक enjoying her food, but at the same time she's quite into workouts also. Yeah. हमने लखनऊ में बहुत खाना खाते थे, शूट कर रहे थे. So there was this restaurant and अनुभव सर really loved. हम वहाँ काफी, जब भी छुट्टी होती थी हम वहाँ चले जाते थे. एंड अभी मेरे पेरेंट्स के साथ में गया था लखनऊ. सो वहाँ पर भी इसी बात पे मोमोज आ चुके थे. तो मैं पेरेंट्स को भी वहाँ पर लेकर गया एंड दे ऑल्सो लव्ड इट. नेमत खाना इट वाज कॉल्ड. या नेमत खाना. एंड तापसी के घर जाओ तो एक ही रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करती है यार वो. एंड आई डोंट वांट टू नेम द रेस्टोरेंट बट इट्स चाइनीज. एंड एवरी टाइम यू गो, मुझे ऐसा लगता है सब्सक्रिप्शन ले रखी है. अच्छा. लाइक इट्स अ थिंग कि वहाँ जाओगे तो ये खाना मिलेगा. या हाँ, हो सकता है कुछ डील होगी, बट लाइक व्हाट डू यू प्रेफर? लाइक एक कोई ऐसा अड्डा होगा फॉर यू आल्सो बॉम्बे में भी और इवन दिल्ली में, which you prefer having? I love home food. Firstly, I'm one of those people because I have a दीदी, मेरी योगिता दीदी जो हैं, जो हमारे लिए कुक करती हैं. She is probably one of the best chefs I've ever had the pleasure of tasting her food, and she's amazing. Even and I like to host a lot. तो मेरे घर पे काफी दोस्त आते हैं, all of that. तो दीदी makes the best food, and सारे फ्रेंड्स, अब तो हम लोग स्क्वाश भी खेलते हैं मेरी बिल्डिंग के अंदर. तो स्क्वाश खेलते हैं, बट स्क्वाश आधे घंटा खेलते हैं, खाना ज्यादा खाते हैं. बेसिकली दैट्स द प्लान. खाने का प्लान ही बनता है बाय द एंड ऑफ इट. और बात करें काम की, ऑन द सेट्स, ऑन लोकेशंस, व्हाट यू प्रेफर हैविंग द मोस्ट, यू कंज्यूम एंड ऑल. लाइक कभी कभार चाय होती है, कभी कभार कुछ स्पेशल खाना होता है. व्हाट डू यू प्रेफर हैविंग? यार शूट पे जनरली आई गेट फूड फ्रॉम होम ओनली. घर से डब्बा पैक होके आता है. You don't prefer like indulging in the खाना वहाँ पर जो होता है? Sometimes yeah, but generally घर से ही खाना आता है because you have to, while you're shooting you have to be a little more healthier.
जैसे शूट खत्म होता है दिन तो आप कुछ भी खा रहे होते हो, बट शूट से पहले या फिर शूट के दौरान देन यू हैव टू ईट अ लिटिल वाओ. That's fine. So it's going to be like ये क्या है? ये अच्छा थोड़ा spicy है, which is peri peri अच्छा, ये momos. आपका है? Yes. As we go मैं back to कॉफी बहुत पीता हूँ. वो मुझे एक चीज़ है जो मुझे पसंद नहीं है, जो मुझे कम करनी है बेसिकली. शूट के टाइम पर आई थिंक आई ऑलमोस्ट हैव लाइक 5 कप्स. तो वो मुझे कम करना है लाइफ में. मेरे को बहुत गंदा कॉफ़ी एडिक्शन है आई थिंक. इन बार मोमोज का अच्छी सी चटनी होती है. the chutney which is good and then it's good. या अगर मोमोज अच्छे और चटनी अच्छी नहीं है, यू वोंट लाइक इट. बॉम्बे का खाना अच्छा है कि दिल्ली का खाना अच्छा है? एंड दिल्ली वाले हमेशा बोलते हैं कि दिल्ली का खाना सबसे बेस्ट है. सो आपके लिए क्या चेंज था व्हेन यू केम टू बॉम्बे एंड started having consuming food over here? ओके, सो आई थिंक बोथ आर डिफरेंट. पैलेट सबका अलग है. बॉम्बे और दिल्ली का पैलेट ही बहुत अलग है खाने का. इफ आई से नॉर्थ इंडियन फूड एंड इंडियन फूड, यस दिल्ली गेट्स इट बेटर. लाइक आई थिंक वो पानी में ही कुछ है उनके, और खाने की आदतें ही ऐसी हैं. आई डोंट थिंक दैट काइंड ऑफ फूड, इवन इफ दे ओपन इट हियर, I won't be able to eat it because it's really heavy and Bombay weather also doesn't allow you to eat that much. Right? So I think वो palate की बात है. But हाँ, when I go to Delhi, if I'm here and of course I miss dal makhnis and your butter chickens and your mutton and all of that and chole bhature. Yeah. So वो सब तो आप मिस करते हो. उस मामले में Delhi takes it away. But there are a lot of Japanese and Mexican restaurants that जो दिल्ली में नहीं है. Which Bombay leads in for sure. Yeah. How many times you have been on the sets? Not on the sets actually. On the streets of Delhi just to have food. All my life, yeah. Yeah. So, I played basketball throughout school, right? Yeah. हमारा प्लान ही होता था कि हम सुबह बास्केटबॉल खेलते थे, 10 बजे प्रैक्टिस खत्म होती थी और सीधा हम जाते थे वहाँ से 3 किलोमीटर वॉक करके, क्योंकि अब एक प्लेट और खानी है तो फिर 10-20 रुपए ऑटो के बचा लेंगे. एंड देन यू वॉक टू लाजपत नगर, अमर कॉलोनी एंड हैव नागपाल के छोले भटूरे. दैट वाज द थिंग. और तब हम, बिकॉज वी वर यंग एंड ऑल दैट, एवरी बॉय लाइक वी वर 10 पीपल और हर बंदा 3-3 4-4 प्लेट खा लेता था. मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 6 to 8 भटूरास इन वन सिटिंग. That was insane. अब तो एक डेढ़ खाया जाता है, बट उस टाइम पे I can't believe I could eat that much. Wow. What dietary changes you have done, Pavail, in your diet, especially when you started making a career in acting, focusing on that, letting go of a lot of things, because I believe sometimes you have to let go of sugar, you have to let go of certain food items what you're consuming and all, not to have after a certain point. आपने क्या क्या changes किया है खुद के लिए? So sugar I was anyways not a big fan of. I sometimes get cravings for sugar, pastry खा ली या cake खा लिया, ice cream खा ली, but that's like once in a blue moon. It's not a everyday thing for me. Other than that, the only good thing that I do in life, which I tell everyone, even if you're not on diet, just eat घर का खाना. That's the biggest diet you can do. I don't know how, but घर का खाना just is easier to digest for me. And were you always thin like this, or did you lose your weight and all to get into this physique? I mean, I was thin, but since the last, I think about 5-6 months, I've been taking care of my body a little better. आज का दिन टूट गया है, but last 6 months I've been on a different diet and a regime of workout and all of that, because I'm shooting right now. So that's also a thing, and that film requires me to be a little more leaner, a little more muscle and all of that. So for that, actually it's a good thing my cheat day came early this time. और मैंने देखा है कि बास्केटबॉल के आप काफी बड़े फैन हो, एंड वी हैव बीन रीडिंग अ लॉट अबाउट इट दैट यू are somewhere, you're trying to pay tribute to Kobe Bryant, and what exactly it is. Can you tell me more on that? No, it's not a tribute to Kobe Bryant. Kobe Bryant has been my idol since I was growing up, right? He was probably one of the best basketball players the world has ever seen. So I used to watch a lot of his games, and I had this jersey, unki jersey hoti thi mere paas. On a sad day when he passed away, my best friend Rohan, who I play with, I mean in school I used to play with, he called me and I was sleeping, and he told me like something like this has happened. He died in a helicopter crash. I think for both of us it was like
it felt very personal because we've literally grown up on watching him and having his jersey. I still have his posters on my, in my house and all of that. So it feels like a very, very personal loss. But yeah, he was a hero. Yeah, he was an inspiration to many, and including me. Yeah, and I have to also ask you that you recently also said that you are inspired by Nasruddin Shah and Amitabh Bachchan when it comes to acting. When you met your idols, or have you ever met them, or no? I want to know how the feeling has been and what you feel when you meet your idol. So And Nasir what sir, inspired you? Like what inspired you from them when you saw their work, and what exactly got you inspired? यार नसीर सर तो मेरे टीचर थे, इसलिए मुझसे हूँ मैं। तो हाँ, तो 2 साल उन्होंने मुझे पढ़ाया है। फिर उनके साथ मैंने 2 साल थिएटर किया है। एक फिल्म भी करी थी जो रिलीज नहीं हुई, पर he is almost like a father figure to me here. The day he saw my film and he messaged me, he called me actually and said, "I'm really proud of you." That was the biggest award that anyone could ever give me. Because that's your mentor, that's your idol, who basically your teacher, guru. Guru बोल रहा है कि I'm proud of you. That was the biggest award I could ever think of. And that was a great moment for me and a great day for me and a great day for my parents as well. बच्चन सर के साथ मैंने एक पहले बहुत पुराने टाइम पर एक 2013 में या 14 में एक शो किया था कॉल युद्ध, और फिर अभी मैंने उनके साथ एक फिल्म करी थी गुड बाय. सो ही इज आई एम इन ऑफ दैट मैन्स एनर्जी, his discipline and the zest he has for acting. Like, it's insane how he's competing with you all the time. Yeah. Like, he doesn't miss a beat. Like, and it's not because it's just craft. He just wants to do it. He just wants to be better. He just wants to kill the scene. I wish I reach, like, even I can be half of him when I reach his age. That'll be a blessing. Especially when you were playing his son, there was a lot of emotional conversations taking place, because there's this one video which still, like, clicks with the people when you're searching for your mother and you don't realize, like, she's not there, and you're like, ma, there's this call for you. That entire scene when you're searching for Neena Gupta, and that entire scene is so emotional. When you were shooting with Amitabh Bachchan, what was the learning which you took for yourself, and how emotional involved were you in your characters, and how do you get involved in your characters otherwise? I don't know यार, मैं ना ऑन सेट उनसे इतना नहीं सीख रहा था जितना ऑफ सेट सीख रहा था. आई लव हाउ ही कैरीज हिमसेल्फ. So that really inspires me. I just love the energy, like I was saying, the zest that he comes up with. Even छोटा सा scene है, but he will put in the same energy and he will try to make it better. He will rehearse that much because he knows. जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं एक ही तो शॉट है, अच्छा दे देते हैं, नहीं, बट फॉर दैट वन शॉट ऑल्सो ही विल मेक श्योर ही डज हिज बेस्ट बिकॉज हिज फेस ऑन द कैमरा. So learning that, all those things only comes from experience, and if I can learn through his experience, I mean, उससे ज़्यादा बड़ी बात नहीं हो सकती मेरे लिए. कभी उनके घर का डब्बा खाया है आपने on the sets and all? नहीं, हमने एक बार पर we indulged in छोले भटूरे in ऋषिकेश, लस्सी एंड छोले भटूरे, और we were just I think setting में टाइम लग रहा था and lunch break हो गया था, so Vikas, me and Bachchan sir and like all of us were there and was like, sir, छोले भटूरे खाने हैं, and we thought कि he's gonna say no. He said, actually यहाँ पर है तो खा लेते हैं. And then we called for chole bhature, and we called from 3 different places, so there were 3 different chole bhature and lassi and all of that, and that day was just lovely. He was talking about his movies back in the day, telling us stories and having chole bhature. Life इससे better नहीं हो सकती यार. किसका डब्बा आप खाना पसंद करोगे अगर बॉलीवुड में से चूज करना हो, या किसी और का भी? तापसी का तो बहुत हेल्दी खाना होता है. I can't eat it. बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है. रकुल का भी बहुत हेल्दी होता है. I don't know, सबके खाने बड़े, मेरा डब्बा बेस्ट है. And do you also prefer having that, there's this one coffee which most of these actresses are having in the morning, which is ghee coffee? No. Have you tried that? I have. And how did you I find don't like it? I do not like it at all. I like my coffee just black and that's it. Nothing in it. कुछ दूध वूध घी वी कुछ नहीं चाहिए. Plain and simple black coffee. That's it. इसके अलावा अगर आपने खुद के लिए कुछ बनाया हो कभी, और इसका टेस्ट कभी अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, but you have tried like cooking? I'm a very good cook. मेरे खानदान में सिर्फ मर्द खाना बनाते हैं. Weirdly, औरतों को खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है, किचन में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है. The girl is lucky whoever is dating him, I'm sure. So my dad cooks really well. मेरे चाचू बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, मैं भी अच्छा खाना बनाता हूँ.
एंड या आई मेरे घर पे आई डोंट थिंक माई मम हैज कुक्ड इन द लास्ट 15-20 years. Yeah, she doesn't like to, but my dad loves to cook and he's an excellent cook. और आई थिंक वो जेनेटिकली मुझ में भी आया है. एंड ऑल माई फ्रेंड्स ऑल्सो वियर्डली everybody loves to cook. So when we have, अगर घर पे लोग आ रहे होते हैं ना, all of that, and we do like a Christmas brunch किया या फिर Christmas lunch किया, Christmas dinner किया, there's actually fights. Who'll cook what? Because everybody wants to be in the kitchen and cook. So which is nice because we get इतना खाना मिलता है मुझे मेरे घर पे. And weirdly सब लोग सारी hosting mostly मेरे घर पे होती है, तो बहुत it's चहल पहल रहती है, खाना वाना रहता है. So yeah, it's fun. But I have to also ask you this, Pavail, and it's a very interesting question to you, which I'm trying to put on you, is that आपने कभी आपकी गर्लफ्रेंड के लिए खाना बनाया है and you know you have got compliments out of it? Of course. Yeah. And what have you cooked? सबके लिए बनाया है मैंने. ऐसा नहीं है सिर्फ गर्लफ्रेंड के लिए बनाया है. यानी प्यार में कोई खाना बनाता है वो बहुत बड़ी बात होती है. Honestly, the guy. Yeah, I've made lots of stuff. Noodles मैं बनाता हूँ. तो those are my, और वो भी वो वाले नहीं होते चाउमीन दिल्ली के. सो दैट इज काइंड ऑफ माई स्पेशलिटी. तो वो मैं अच्छे बना लेता हूँ, बहुत बढ़िया, आंखें बंद करके बना सकता हूँ. चिकन, मटन, वेज में छोले, वो मेरे डैड की देन है. ही मेक्स द बेस्ट छोले इन द वर्ल्ड. सो या नेक्स्ट चीट डाइट के टाइम पर हम पवेल के घर पे जा रहे हैं जस्ट टू हैव द फूड. आ जाओ. करेक्ट. आज जो. But Pavel, I have to also ask you this, that as we talk about food and about work, what keeps you going when you're going through stress, you know, when it comes to work and, you know, shooting, you know, there is a lot of stress, you know, when it comes to doing acting and all. आपको जब तभी क्या खाना पसंद आता है? Yeah, do you prefer like going light completely when you're stressing out or when you're, you know, but a bit tensed? मेरा स्ट्रेस और खाने से कोई लेना देना नहीं है. अच्छा. कभी ऐसे नहीं होता कि स्ट्रेस ईटिंग किया हो कभी? कभी नहीं. कभी भी नहीं. मतलब मेरा वो रिलेशन ही नहीं है खाने से. हाँ, कई बस वो होता है मेरी डाइट खत्म हो जाती है. एक्चुअली आई ईट लेस व्हेन आई एम स्ट्रेस्ड. That's the only change that I feel. When I'm okay, I'm feeling okay, then I eat properly. Otherwise मेरी डाइट थोड़ी खत्म हो जाती है and then I start losing a lot of weight. But yeah, so that's the only thing that stress can do to me in terms of my diet. Other than that, जब stress होता है तो बहुत लोग हैं मेरी लाइफ में, बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं, बहुत दोस्त हैं, फैमिली है who really take care of me. और most of the time stress होने नहीं देते. संभाल लेते हैं. हाँ. और जब आप सैड होते हो या कभी आपका you know you're going through a heartbreak or any you know rough phase, that time do you prefer like consuming food or what do you prefer? और especially you know रात में जब हम जागते हैं 3-4 बजे, तब cravings होती है, midnight cravings to you know have something or consume something. आपको ऐसे कुछ होता है? पहले होती थी यार. अब मैं थोड़ा सा और डिसिप्लिन हो गया लाइफ में. So I sleep by, if I'm not shooting then I sleep by 12:31. And if I'm not if I'm shooting then तो मैं 10 बजे I'm off. मैं सो जाता हूँ क्योंकि सुबह फिर 5 बजे उठना होता है. So you have to you know. But मेरा साथ फूड का मेरा ये है कि as soon as I wake up मुझे आधे घंटे के अंदर ब्रेकफास्ट चाहिए. My day, like I get hangry, like मुझे गुस्सा आने लगता है अगर मुझे आधे घंटे के अंदर खाना नहीं मिला तो. So sometimes when I'm traveling too far, like for shoot locations, so Didi will pack my breakfast, so I'll have it in the car. नहीं तो पास में है, so when I go there, so Salim, my assistant, उसकी प्रॉब्लम हो जाती है बेचारे की, because like कि सर को खाना चाहिए आधे घंटे के अंदर, and that's the only time I can be a little angry or something like that, not even angry, but yeah, irritable. Other than that, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. आप शूट पे जो मर्जी करना है करो. I am the least bothered. I'm only concerned about myself. But just that half an hour, सुबह उठते ही आधे घंटे वाला, that's my thing. वो breakfast चाहिए मुझे आधे घंटे के अंदर. And lastly, before I let you go, what are your upcoming projects you're working on, focusing on? So I'm shooting this film called Deva. Which has Shahid Kapoor in it, the lovely guy. उनकी पिक्चर भी रिलीज हुई है, which I haven't seen. I have to watch it. पूजा हेगड़े है उसके अंदर, मैं हूँ, रोशन एंड्रूज ने डायरेक्ट करी है, and सिद्धार्थ रॉय कपूर, RKF, they're producing it with Z Studios. So currently I'm shooting that and hopefully it will release this year. So yeah, I'm damn excited for that. इसी के लिए सब डाइट वाइट चल रहा था जो आज बिगड़ गया है.
थोड़ा सा बिगड़ा है. I'm so sorry. Oh, that's fine. But you know, as I spoke to Shahid also recently for an interview when he spoke about this, you know, and he said like he's following a certain look. Yeah. He's in a certain look for that. Are you also having a certain look for Yeah, this? yeah. So because right now I think we're gonna start shooting again next week or something like that. So the look will be completely different to what I look right now. Okay, well that's exciting. And before I let you go, let's enjoy food. Yes, please.